acid, bases and salts. Now I am going to discuss about how the salts are made and where they are used. राइट बहुत सारी कॉमन सॉल्ट्स होती हैं और इन कॉमन सॉल्ट्स को हम कहाँ यूज करेंगे कैसे बनाएंगे पहले तो हाँ ये सब की छोटी छोटी जानकारी हमको क्लास 10th में पढ़ना होगा. कॉमन सॉल्ट, एक तो कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो है ना, फिर और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं. बोलो क्या क्या. हाँ भैया बोलो. हाँ खाने का सोडा, यस. बेकिंग सोडा, yes. Then washing soda, yes. And then और बोलो bleaching powder, yes. You know a lot of things. Plaster of Paris, yes. All these are salts. Now let us study one by one how they are made, where they are used, right? तो चलो सीखते हैं ना. ओके सबसे पहले सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं. देखो ये सारे सॉल्ट है, अलग सॉल्ट है ना. ये आपका रॉक सॉल्ट दिख रहा है. हाँ ये वाला. तो इसमें का कॉम्पोजिशन ऐसा होता है जो आप लोग चाट वगैरह में डालते हैं ना, वो वाला सॉल्ट है. ये उपास में खाते हैं ना, वो वाला नमक है. देन यू हैव गॉट ऑर्डिनरी नमक एंड देयर आर plenty ऑफ द सॉल्ट्स व्हिच इज देयर अवेलेबल एंड वी हैव इट अराउंड अस एवरी डे, राइट? ओके सो द टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स. Salts में भी ना प्रकार होते हैं. Some salts are acidic in nature, some salts are basic in nature, some salts are neutral. Now, how is an acidic salt formed? अच्छा बताइए salt कैसे बनता है? बोलो. So you will say कि if you take an acid and react it with a base, you will be getting salt प्लस वाटर. ठीक है भैया मान गई मैं. लेकिन ये एसिडिक क्यों हुआ? सॉल्ट तो सॉल्ट होना चाहिए. लेकिन बेटा वी डिड स्टडी अबाउट अ स्ट्रॉन्ग बेस, वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ इफ यू हैव गॉट अ सॉल्ट which is formed by the neutralization reaction between a strong acid and a weak base, तो कौन सी characteristics ज्यादा है? तो बोले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग था. सो जो सॉल्ट विच विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस, इट विल हैव एन एसिडिक कैरेक्टर. The pH of this aqueous solution of the salt, you know, it will be less than 7, making it acidic, right? So this kind of the salt is called as the acidic salt, right? Acid takla. Then you have got the basic salt. Now what is the basic salt made up of? Basic salt is formed by the neutralization reaction between a weak acid and a strong base. So who is strong here? The base is strong. The moment you see that the base is strong, the pH of the aqueous solution of the salt is greater than 7. The moment you see that it is more than 7, then you know that it is a basic salt. And if you have to talk about the neutral salt, what is a neutral salt? A neutral salt is formed by the neutralization of a strong acid by a strong base or a weak acid by a weak base. So here what happens is the aqueous solution remains, the pH has 7. So any of the aqueous solution of the salt, if the pH is equal to that of 7, so you will say that is a neutral salt, right? So we know one thing, neutralization is the reaction between the acid and base to give you salt and water. But if an acid is strong, it will become an acidic salt, and if the base is strong, it will become a basic salt. But if they are both either very strong or very weak, in both the cases you will be getting a neutral salt. Clear? Okay. Now let's talk about the rock salt. Rock salt also has the same composition as that of the salt which we have it in a food, that is NaCl, but this rock salt is there in the form of the rock. Basic composition is NaCl, तो उसको सेंधा नमक कहते हैं, उपवास में खाते हैं. इसमें थोड़ी सी impurities ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसकी जो कलर होती है वो थोड़ी सी पिंक कलर लिए हुए होती है ना. तो it is found in different parts of the world and the brown color is because of the impurities, क्योंकि ये पत्थर के रूप में मिलता है ना, तो इसीलिए this is called as the rock salt. ठीक है. समुद्र में से हम नमक का पानी लाते हैं या रॉक सॉल्ट से ले लेते हैं NaCl.
अब इस NaCl को रॉ मटेरियल के रूप में लेते हुए देखो सारा समुद्र हमारा है ना, इतना सारा बड़ा बड़ा ओशंस, हाँ, ये सारे के सारे ओशन के पानी में आपको कौन सा सॉल्ट ज्यादा मिलता है? तो आपको पता है इसमें जो बेसिक सॉल्ट होता है वो होता है NaCl, है ना। NaCl, समुद्र के पानी को सुखा दो, आपको क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। इम्प्योर होगा, थोड़ा सा उसको प्यूरिफाई कर लो, पानी में सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दो, और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो उसको कहते हैं हम ब्राइन, NaCl। कहां से आया? तो रॉक सॉल्ट से आया या सी से आया, ठीक है, क्लीन था, देन वी मेड अ सोल्यूशन ऑफ इट इन water. What you get, this solution is called as the brine. Right? Now this brine solution is taken in a big container and you have got two electrodes. One which is put in the first part of the big chamber and this on the second part. Let me call this as the first part and this as the second part, and these electrodes chambers are separated by a perforated separation so that the brine can go from one place to another but other चीजें नहीं जा सकती है, कुछ ऐसा arrangement होता है. One of the terminals of this electrode is connected to the positive terminal of the battery. The other is connected to the negative terminal of the battery. What you can see here is that the reaction starts to happen the moment the current starts flowing into it. So the current will start flowing, making the electrode in the chamber number 1 as positive and the electrode in chamber number 2 that is negative. Now there is some reaction which is going on. So what is the reaction? Say you have the brine solution in which you have got sodium chloride. The moment you put it inside the water, NaCl breaks down into Na plus ions and साथ में आपको मिलता है chloride का ions. Now there is water. Now this water, there is electricity which is passed and already you have got the sodium ion and chlorine ion inside it. Now this will dissociate water even. So you will be getting OH negative ion and साथ में मिलेगा that is the H plus ions. Now there is a recombination process which will take place now. Now you all know that the chlorine is negative in nature, right? The negative chlorine, it will get attracted towards the positive electrode. See this electrode, as I've already told you, this is positive. So all the negative ions will get attracted, right? So this OH ion is also negative, so that also will get attracted towards it, but it will not get neutralized. The current is passed only so much that the chlorine जो यहाँ पर मिला ना, it is actually the chloride ion. This chloride ion and another chloride ion, they will get combined with each other, giving the electrons to this electrode, and they will get converted into chlorine in the gaseous form. Now gas is lighter than the liquid, right? So it will come out here, and if you are able to collect it and put it into a cylinder, compress it, you will get a cylinder full of chlorine gas which is out there, right? Now what happens in the chamber number 2? In the chamber number 2, we have got the electrode is negative in nature. So all the positive ions will get attracted towards it. Hydrogen get attracted, sodium also attracted. Nothing happens to sodium because that much current is not passed. Here the hydrogen जो आपका ion है, H plus ion and the H plus ion, that will take the electron which was given out by this chlorine, but in chamber number 2's electrode, that is electrode number 2, and it will get converted into the hydrogen gas. So you have got
chlorine gas which is coming out of the chamber number 1. Then we have got the hydrogen gas which is coming out in the chamber number 2. And there is another substance which is also formed. What is that substance? See, inside the solution you have the Na plus ion and also you have got the OH minus ions. भैया ये दो है, तो दो है तो ये दोनों तो पानी में रहेंगे ना, तो इनको आयनिक फॉर्म में रहेगा और हमको मिल जाएगा दैट इज NaOH. कंबाइन तो नहीं करेंगे, यहाँ पर अभी भी वो आयनिक फॉर्म में ही रहेंगे. सो यू हैव गॉट 3 प्रोडक्ट्स इन द क्लोर alkali process. You have got 3 products in the chlor-alkali process. Product number 1, that is the chlorine gas. Product number 2, that is the hydrogen gas. And you have got the product number 3, which is the sodium hydroxide. Okay. Now, these substances are commonly used in our daily life. Where? That is the question. So, let us go and first talk about the chlorine gas. क्लोरीन गैस कहाँ यूज होगा? तो भाई वाटर ट्रीटमेंट इन स्विमिंग पूल्स, यस, इवन द ड्रिंकिंग वाटर. So if you pass chlorine gas through water, if you pass chlorine gas through water, what will happen? What will happen? Tell me. All the germs that get destroyed. Right? Now you are safe to swim in the swimming pool. Similarly, after the water is treated, the drinking water which comes in a tap, it is also after filtering, they pass chlorine gas through it. Why? Because there are a lot of germs and these germs get killed. Sometimes you feel ना क्लोरीन स्मेल आ रहा है तो उसको बॉईल कर लेना चाहिए. अगर बॉईल कर लिए तो जितना क्लोरीन गैस उसमें डिसॉल्व हुआ है जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और आपने बॉईल कर दिया तो क्लोरीन गैस उसमें जो है ऑलरेडी वो चला जाएगा एंड यू विल नॉट गेट दैट स्मेल ऑफ द वाटर. ओके, that is one of the use. And the second use what we have is it is used in making PVC pipe, polyvinyl chloride, right? जो प्लास्टिक की पाइप आती है ना पानी की, हाँ, इलेक्ट्रिक का भी होता है पाइप्स, तो ये इसको PVC पाइप्स बोलते हैं. डिसइंफेक्टेंट बनाने के काम आता है, CFC, पेस्टिसाइड और भी बहुत 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 सारे यूजेस होते हैं इस क्लोरीन गैस के. ठीक है, अच्छा पता करो और क्या क्या यूजेस हैं. हाँ, आपको पता चल जाएगा. Then you have got the hydrogen gas. Now this hydrogen gas, it is coming out of the chamber number 2. It is used as a fuel. फैक्ट्रीज में यूज करते हैं. भाई रॉकेट जाती है ना आपकी इसरो से स्पेस में, तो उसमें क्या लिखा जाता है? रॉकेट में जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसमें भी तो हाइड्रोजन डालते हैं. ठीक है, अब इसको अमोनिया बनाने का भी काम आता है. अमोनिया से बनाते हैं. अमोनिया वैसे तो डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन हाँ अमोनिया से हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाते हैं. सो अमोनिया बनाने के लिए भी हाइड्रोजन की जरूरत होती है. ठीक है, अब आती है NaOH. NaOH, that means sodium hydroxide. Now the sodium hydroxide is taken out of this particular pipe from here and then it is dried, it is made into the crystalline form of NaOH and then it can be used for degreasing the metals. मेटल्स में अगर ग्रीस वीज आ गए तो उसको साफ करने में काम आएगा, सोप्स बनाने के काम आएगा, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, पता नहीं क्या क्या. Right, there are lots and lots of uses of this NaOH. Right, go find out more and let me know. Yeah, let's prepare for the exam. Exam से चाहता जिंदगी, right? तो एग्जाम्स के लिए तो प्रिपरेशन होता ही है, लेकिन जिंदगी में भी ये सब पता होना चाहिए. पढ़ लिए हो तो क्या हो गया, कहाँ यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आगे चल के नई फैक्ट्री लगाएंगे ना. चलो